Okay, we will start the lecture. We were just only 31 students joined now. Meanwhile, just I will do the adjustment here. In morning, for offline lecture, more than 10 students were present. Now they know that how to solve the problem. Physically, I have explained to them how to operate calculator. Even I have explained how to solve the problems in detail. I have explained to them. Again, I'm requesting to you, those are near to the colleges, means maybe a 10-kilometer distance, maybe a 15-kilometer distance. And if the vehicle is available to you, then definitely you should require to come to the college. आप किसी को पूछ लीजिए, जो कॉलेज को आए थे ना, उनको पूछ लीजिएगा कि आपके जो भी डाउट है वो इजीली क्लियर हो जाते हैं. एंड यू आर हियर फॉर स्टडी पर्पज, नॉट फॉर जस्ट फॉर सेक ऑफ सर्टिफिकेट पर्पज. मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि आपको खाली डिग्री सर्टिफिकेट ही लेना है. तो मेरा तो कहना है कि जो भी नियर बाय विसिनिटी है कॉलेजेस के, वो उधर ऑफलाइन लेक्चर को आने ही चाहिए. फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट केम टुडे. प्रणव वाघमारे. प्रणव. हाँ सर. का रे आज कसं आलं नाही ऑफलाईन? नाही सर, व्हेकल अवेलेबल नाही आहे. पण तुम्ही दोघं तिघ आहे ना असे? हा तेच ते- दोघा तिघांच्याकडे नव्हते म्हणून. आज काय करू नका, येत जावं डेली कॉलेजला. ऑफलाईन आहे, जवळ आहे, पंढरपुरात आहे तुम्ही. जे कोण पंढरपुरात वगैरे आहेत ना, त्यांनी कसं आहे, इव्हन सायकलवर आलं तरी परवडते. सकाळी किती ते किती कॉलेज आहे? बघा, तुमचा शेवटना तुमचा निर्णय आहे तो. पण तरी पण माझं मत असं आहे की तुम्ही येणं व्यवस्थित आहे. जे बी पंढरपूरच्या जवळ आहे त्यांनी येणं गरजेचं आहे. कारण इन फ्युचर इफ सपोज दॅट दे हॅव सेड दॅट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव्ह ऑफलाइन एग्जाम, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गिव द जस्टिस टू द एग्जाम ऑल्सो. एग्जाम को भी आपका क्लियर एग्जाम होगा क्या नहीं, वो समझ में नहीं. सर, आपका एग्जाम भी क्लियर हो सकेगा क्या नहीं, वो भी पता नहीं है. It's my humble request to you that you can try to come to the colleges, adjust some vehicle, or you can come by bicycle also. Even buses are also available. Buses सुद्धा पंढरपूर स्टँड वरनं आहेत. I will take the next example. I think so this is the fourth example. Now draw this diagram. Now draw this diagram and try to solve this problem now. I will not give the location of A here. You decide. I will give the hint that you can take the point A is here and check the object is symmetric or not. These two things you are required to cross check. From which point we are required to find out the centroid. कौन से लोकेशन से आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, ये पहले देख लीजिएगा. So I have mentioned here A. From A, but in exam they are not going to give this, huh? So you are required to decide that from which point you want to find out the distance. Suppose that if somebody wants to find out the distance from any other location, no problem, it depends on you now. ऐसा कोई strict rule नहीं है
यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम ए ओनली। सेंट्रॉइड का लोकेशन आपको ये से ही फाइंड आउट करना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ मच डिस्टेंस यू वांट टू और हाउ which point you are required to consider for distance measurement. So for initial few problems I am going to give a point location, but afterwards you are required to decide that on which point you are required to find out the from which point you are required to find out the centroid of this object. Now second thing already I have mentioned to you, check the object is a symmetric or not. If the symmetric is there, then definitely one of the centroid location you are going to get. Now Ashish Atkare, Ashish, येस सर. तू इथं जवळच आहे ना रे राहायला? हो सर, पण व्हेकल नसल्यामुळे अडचण येते. अरे किती नदी तर पार करायची आहे की रे, गोपाळपुरातच डायरेक्ट येतो की अशी. हो सर ना, पप्पाला फोन करून येतो सांगू पण सर व्हेकल नको सर. ना? सांगा तरी करायचं तुम्ही मला. सांगा वाटल्यास, पण व्हेकल अडचण असल्यामुळे सर. नाही नाही, कसं आहे, जवळच्या विद्यार्थ्यांनी येणं गरजेचं आहे रे. कसं असतं या की एक वेळेस ट्राय करतो सर याला. ऑनलाईन लेक्चर नाही घेतलं ना, ऑनलाईन लेक्चरला नाही आलं तरी चालतंय. ऑनलाईनला एक वेळेस अटेंड नाही केलं तर चालतंय. दोज आर प्रेझेंट नाव फॉर द ऑफलाईन लेक्चर. दे नो दॅट हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम नाउ. इफ दे आर ज्वाइंड और नॉट ज्वाइंड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. उनको सब कुछ अभी पता चल गया है कि कैसे सॉल्व करना है. तो जो भी पास में ही है उनको तो आना ही चाहिए. आई थिंक सो मेनी स्टूडेंट्स आर नियर टू दिस, नियर टू द कॉलेज. प्रेरणा कोडी, रोल नंबर 11 and 12. 11. हाँ 11 and 12 ऑल्सो, सुरेखा कोळी. प्रेरणा तुम्ही जवळच आहे, पंढरपुरातच आहे ना? नो सर, कोल्हापूर. कोल्हापूरचा का तुम्ही? हा. आणि सुरेखा यस सर. तुम्ही कुठले लोकेशन? सर उमदी. उमदी मध्ये का? ओके ओके ओके. जो भी पास में हो तो 100% आने की कोशिश कर लीजिएगा. व्हीकल का वो बहाना मत लगाओ. साइकिल से भी आ गए तो भी चलेगा. Okay, now we'll start today's lecture. In this lecture, you can see it only 45 students are present now, but let it be tomorrow. I will check that, cross check that why they are absent. Now check here. I have given the dimensions: 100 mm, 20 mm, 100 mm height, 20 mm width, 20 mm, and 60 mm. Now it is your now duty to solve this problem. इस प्रॉब्लम का आपको क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस पे आपको फाइंड आउट करना है. तो सेंट्रोइडल एक्सिस पहले आपको लोकेट करना पड़ेगा. नाउ आई विल आस्क वन क्वेश्चन. मोनाली, रोल नंबर 4. Yes sir. नाउ यू टेल मी दैट इज दिस ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक? I think I think about no. why Exactly you are required. Exactly you are required to tell. I think why it is I think. It is perfectly visible object. It is not invisible object. So you should be a perfect here. It is correct. You are correct here. It is a symmetric on YY axis. It is symmetric on a YY axis. Now, which centroid I am going to get here? X bar or Y bar? Monali, you are required to tell. X bar is equal to 500 mm. Correct. You are exactly correct. So this object is a completely symmetric on a vertical axis. Only on a vertical axis it is a symmetry. Okay. So on this vertical axis it is a symmetric. So therefore, if the object is a symmetric on vertical axis, I know that the centroid is from location A, centroid is 50 mm. X bar I am going to get. But still I don't know the Y bar. We will find out this Y bar. मतलब Y bar का मतलब इस ये से कौन से हाइट पे वो लोकेट है, सेंट्रॉइड लोकेट है, वो मेरे को फाइंड आउट करना है. Am I right? लेकिन आप देख लीजिएगा, ये से
इसका सेंट्रॉइड, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज दिस, आई विल कंसिडर दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्ट. ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड इधर होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड इधर होगा एंड थर्ड ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड इधर होगा. राइट. और तीनों का मिला के शायद इधर किधर तो होगा, इधर होगा या इधर होगा, मेरे को पक्का पता नहीं है. सो वी विल फाइंड आउट दिस. सो बिफोर दैट वी हैव रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट our we have required to follow our same procedure, a regular procedure we have required to follow. So what is the first? We have required to draw 3 diagrams. First is here, I will draw by considering location A. Here B is equal to 100 and D is equal to how much? 20. Then second object I will draw here. Location A इधर है, this distance is a 20, B is equal to 20, D is equal to 100. Okay, now from point A, this is the location A, this is the second object, Vikas Virahar. ओके, नाउ सेकंड ऑब्जेक्ट आई हैव ड्रॉन. थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, आपने शायद ये डायग्राम ड्रॉ कर ली होगी, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, आई विल इरेज दिस मच पोर्शन, I will erase this much portion. So B is equal to 60 and D is equal to 20. और ये का लोकेशन इधर है, so I will take location A here and this distance is a 50 and this distance you know that it is a how much it is? How much? बेस का 20 120 है, 120 बेस का 20 प्लस 120 है ना, देख लीजिए बेस का छोटा वाला ये पहला 20 प्लस ऊपर का 100, सो 120 आएगा ना. यस सर. नाउ 3 ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिए हैं. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेप, राइट डाउन दिस ऑल दिस थिंग्स. A1, then next one is X1, Y1, IXX1, IY1, HX1 and HY1. Similarly, write it down. A2, X2, Y2, IXX2, IYY2, HX2 and HY2. And similarly in this case also A3, X3, Y3, IXX3, IYY3, HX3 and HY3. So these many parameters we are required to find out. Now find out these parameters now. आपको सभी के फॉर्मूलेज पता है, आपको मैंने पहले ही ऐसे 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. दिस इज आई थिंक सो इट इज अ 4th प्रॉब्लम. ये 4th प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. एक्स बार मेरे को पता है, वाई बार मेरे को फाइंड आउट करना है. सबका एरिया कैसे, एरिया का फॉर्मूला सेम रहेगा बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल. IXX1, IY1 का भी फॉर्मूले सेम रहेंगे, वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी. ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम A1, B into D, 100 into 20. X1 already we know that it is 50. Y1 D by 2 10. IXX1 BD cube divided by 12. DB cube divided by 12. X bar minus X1 it is a 0. Y bar minus Y1 we will find out. Am I right? So 100 into 20, 20
2000, it is a 2000. BD cube 100 into D cube means 20 cube divided by 12 and 20 into 100 cube divided by 12. You are required to do the calculation. Also, do a similar thing for other two objects. दो other object के लिए भी आप find out कर लीजिएगा ये. I will give a time for a 5 minutes. If you are having any doubt or question related to this problem, you can ask me now. प्रॉब्लम छोड़ते वक्त आपको कोई डाउट होगी तो मेरे को पूछ लीजिएगा, बिकॉज फर्दर पार्ट आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑन अ बोर्ड, वो आपको ही करना है. मेनी स्टूडेंट्स माइट हैव नॉट टेकन अ कैलकुलेटर. प्लीज as soon as possible you have to take a calculator. You take from your friend also, no problem, but you should have a calculator. विदाउट कैलकुलेटर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक भी प्रॉब्लम, इवन मैथमेटिक्स का भी प्रॉब्लम यू कांट सॉल्व. एंड कैलकुलेटर इज अलाउड इन एग्जाम. यू माइट बी नॉट नोइंग दिस, कि आपको शायद ये पता नहीं होगा कि कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हम एग्जाम में, ऐसा आपको शायद कभी तो सुना होगा, लेकिन नो, इन इंजीनियरिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जाम. सो आपके पास कैलकुलेटर होना जरूरी है. एंड इफ यू आर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर यू शुड हैव, क्योंकि 4 साल आपको ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. सो एवरीवन शुड रिक्वायर टू टेक केयर दैट कि द कैलकुलेटर व्हिच यू आर गोइंग टू टेक, यू कैन टेक फ्रॉम Amazon, you can take from Flipkart, no problem. But if you are going to take from your friend also, no problem, but within 1 or 2 days you should require to take this calculator, because this type of problems means continuously we are going to take numerical problem, we have to take. ऐसा theoretical part बहुत छोटा है इधर, so we are not going to consider. मैक्सिमम थेरोटिकल पार्ट है ही नहीं इसमें, बहुत छोटा है, इसलिए क्या होता है कि हमेशा हमें प्रॉब्लम ही सॉल्व करने पड़ते हैं. एंड इफ यू आर नॉट कैलकुलेटर यू आर आइडियल, आप आइडियल ही रहेंगे घर में. नाउ डू द कैलकुलेशन एवरीवन. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी नाउ.
Okay, now I will ask you some answers on this. If what is the value, directly I am going to ask here values. What is the value of A2? Who is going to tell? A2, 2000. 2000. 2000, X2, 2000. X2 50, 50. 50. Y2 50. 70. 70, 70. IXX2, IXX2 20 into 100 cube divided by 12 and 100 into 20 cube divided by 12. X bar minus x2 it is 0 and y bar minus y2 will find out. Minus 9.24. कशाचे hy2 चे हाँ hy2. minus 9.24. 9.24. IXX2 किती येतोय? IXX2 16,66,666. no you don't put in lakh, just put here 16 into 10 raised to 3 10 raised to 4 in this way you tell me. 1.6 into 10 raised to 6. 1.6 into 10 raised to 6, no? Hmm. Okay. Similarly IYY2 6.6 into 10 raised to 4. 6.6 into 10 raised to 4, no? Okay. IXX1 also you tell me. IXX 6.6 into 10 raised to 4. Correct. And IYY And same आएगा IX इधर. is to 1.6 into 10 raised to 6. सेम ही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है. इधर ये 3 कितना आएगा? A3 1200. 1200 correct. 12,000. It is 50. Y3 कितना आएगा? 130. 130 correct. IXX3 40,000. 40,000. हाँ. Okay. And IYY3 4.3 into 10 raised to 5. HX3 x bar minus x3 it is a 0. Y bar minus y3 find out this. 6 minus 69.24. लेकिन एक प्रॉब्लम है y बार कितना आ गया आपका? No sir, minus 69. 69 okay. 69.24. 24. Y बार कितना है? Y bar 60.76. 60.76 okay. आप ये सभी जो भी फाइंड आउट कर रहे हैं वो सभी चेक कर लीजिएगा यह वैल्यूज है क्या नहीं आपके पास. then we'll go forward. How to find out y bar I will not tell now here because हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए कि x bar and y bar कैसे सॉल्व करने का. So I will not give here the formula also I am not going to write here. So y bar का वैल्यू सेम आता है. ये y bar का वैल्यू डिफरेंट आता है तो मेरे को बता दीजिएगा. हेलो रोल नंबर 41 मेगा. हाँ ये सर सॉरी सर. हा असू द्या. हे किती आहे नंबर y बार ची व्हॅल्यू सांगा मेगा तुम्ही. अर्जुन इंगळे यस सर. हा किती व्हॅल्यू आहे y बार ची? सर 55.07 आले सर. 55.07. एक दोन मिनिटं आपण अजून क्रॉस चेक करूया. Now who is going to tell ह्याच्या व्यतिरिक्त कोणाची ये छोड़ के किसी का डिफरेंट वैल्यू आया होगा तो साकिब
अर्जुन यस सर. जरा अनम्यूट करेगा, अनम्यूट. ओके, शाकिब. शाकिब, हेलो सर. हाँ, कितना वैल्यू कितना है वाई बार का? हाँ, कितना वैल्यू कितना है? प्रणव. सर हाँ, सर मेरी तो 45.38 आ रही है. 45.38. हम्म. आपका y1 कितना है? पहला y1 10 है, 10 70 एंड y3 130 आ गया है ना आपका. हेलो, आई विल राइट फॉर्मूला हियर. ये वैल्यू चेंज होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर भी मैं लिखता हूँ a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. Now do the calculation. So please do the calculation. 60.76. 60.76. हाँ सर. ओके. हे सोडून जर दुसरं कुठला आन्सर येत असेल तर मला सांगा. Otherwise we will take this answer 60.76 as an answer here and we will go forward now. yes Okay. sir. Same is sir. Same Same है. sir. Okay. Okay. Now we will go forward. We will find out IXX, I capital XX and I capital YY. Now those who have not completed this part, values you write it down as it is. We will see remaining means you have required to just cross check after completion of lecture. अभी इस वक्त आप ये सभी जो वैल्यूज बोर्ड पे आए हैं वो चेक कर लिख लीजिएगा, बाद में क्रॉस चेक कर लीजिएगा. ओके. नेक्स्ट फार्मूला यू नो दैट. नेक्स्ट फार्मूला, how to find out IXX capital XX. So that I will explain now. I will erase this much portion. I capital XX, moment of inertia about centroidal axis is equal to IXX1 plus A1 HY1 square plus IXX2 plus A2 HY2 square plus IXX3 plus A3 HY3 square. आपके पास सभी के वैल्यूज है, आप पुटअप कर लीजिए इधर एंड फाइंड आउट द आंसर. In my case, it is going to come 12.85. 12.85. You are required to cross check this answer. 12.85 into 10 raised to 6. And IYY you have required to find out similar formula. IYY1 plus A1 HX1 square plus IYY2 plus A2 HX2 square plus IYY3 plus A3 HX3 square. Now, in this case, HX1 is a 0, so total term will become 0 now. This term HX2 is also 0, this term is also 0, this term is also 0, A3 HX3. So now the value is IYY. In my case, it is going to come 2.09 into 10 raised to 6. 2.09 into 10 raised to 6. Please cross check this answer. Please cross check this answers.
Have you received the same answer or is it the different answer you have got? IXX 12.85. होय सर. Okay. And Sir, IYY? 12.85 multiplied 10 to the power 6. Correct. Now IYY? 2.09 sir, multiplied 10 to the power 6. 2.09. Okay, correct. Now in this way, we have completed the fourth problem also. Now this lecture will be uploaded on YouTube after half an hour. The link I will provide to you. If any doubt is there, you can ask by telephonically. You can ask to me if any issues are there related to solving this problem. Okay. Now those who have not kept the attendance, please keep the attendance in the chat box. So we'll stop here today. Okay. So tomorrow we'll see the next problem, and remaining theory part we'll see in the coming lecture. But another 2-3 lectures I am going to take on the moment of inertia and one lecture on a theoretical part. Okay, we'll stop here.